So we all watch such movies. We love to watch Avengers. We love to watch the Superman, the Spider-Man, and these Marvel movies. And we love to read comics, science fiction, and stuff like that. Recently, this movie came by the title Avengers Endgame. So what actually is the end game मुस्लिम perspective से, और क्या इन मूवीज़ का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सब के माइंड में आता है. तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हमें जो फितना दज्जाल के बारे में बताया गया, ओके, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ. बिकॉज सीक्रेट सोसाइटीज़ व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर फर्स्टली वर्किंग ऑन द एजेंडा of Satan, that is to promote immorality in the society, that is to snatch away the souls, the humanity of people, to make them robots, to make them insensitive people, zombies literally, okay, who think of nothing, who just want, they are not ready to give anything, and who don't benefit anyone, and they are not productive people at all. They may be great bankers, great entrepreneurs, they may be, great doctors, great engineers, building stuff and participating in building a civilization, but deep down inside they are not even human beings. This is their agenda. जो टर्मिनेटर मूवी में भी दिखाया, machines want to destroy us, they want to hijack our lifestyle, and they want to snatch away the very humanity among in ourselves, okay. So this is very concerning, this agenda. And then the second agenda, is to create such a people who will ultimately submit to the false messiah, that is the Dajjal, that is the Antichrist, जिसका by the way हर मज़हब में ज़िक्र है किसी ना किसी अंदाज में, और सबसे ज़्यादा क्लियर इस्लाम में उसका ज़िक्र है, right? So we cannot shy away from the truth that Dajjal is to come, because there are so many sahih hadiths pointing to coming of Dajjal, pointing to the coming of Mahdi, pointing to the coming of Isa alayhi salam, Jesus peace be upon him, the second coming of Isa alayhi salam. And Christianity has this concept, Judaism has this concept, and in some way or the other way, indirectly many other religions have this concept that the world is going to get destroyed, right? तो आखरत का जो concept है, यौम अल क़यामा का जो concept है, ये हमें distorted forms में और religions में मिलता है, but purest form में इस्लाम में. So the question is कि एंड गेम, एवेंजर्स और ये बाकी जो मूवीज़ बन रही हैं, क्या ये हमें कुछ हिंट्स दे रही हैं? जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो बैटल दिखाई है, हॉबिट में जो बैटल ऑफ द 5 आर्मीज़ दिखाई है, एंड दैट इज़ लीडिंग टू द सीक्वल ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और उसमें फिर दिखाया एक अल्टीमेट बैटल होगी बिटवीन द ईवल एंड द ट्रुथ, बिटवीन द गुड एंड द ईवल, एंड देन द कैरेक्टर ऑफ गैंडाल्फ, द कैरेक्टर ऑफ एरागॉन, सो मेरी क्या थ्योरी है, मैं इसको रिलेट करता हूँ कि इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है ईसा अलैहिस्सलाम के आने का, इमाम मेहदी का, फिर दज्जालिक फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ने का, सैटनिक फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ने का, आई बिलीव कि प्रिटी मच मूवीज़ में ये सेम चीज़ दिखाई जा रही है, बट ऑब्वियसली उनका कॉन्सेप्ट हमसे थोड़ा डिफरेंट है, बट द क्रक्स इज़ द सेम, द मेन थिंग इज़ द सेम. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि व्हेन विल दज्जाल कम, how are we being prepared to accept him as the master, to join his forces, indirectly to become more and more dependent upon him. And secret societies are on this agenda, they are actually creating movies, TV series, and we are taking them without questioning them. We are absorbing everything. We are absorbing that Dajjali culture, I call that Dajjali culture, which is totally against the teachings of Anbiya, which is basically that one culture that governs us all, that one ring to rule us all. यानी जो कि Lord of the Rings में एक concept है, one ring to rule them all, one system, one culture, one sort of values to rule us all, to define us all. And what is the fitna of the Dajjal? In short, the fitna of the Dajjal has some layers, and the greatest of those layers, वो जो पर्दे हैं, वो जो लेयर्स हैं, जिन लेयर्स के पीछे दज्जाल छुपा होगा, उसको रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल होगा. बड़े कम लोग उसको रिकग्नाइज़ करेंगे, इवन दो उसके माथे पे कफरा लिखा होगा. मेरी ये थ्योरी है, दैट्स बिकॉज देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. देयर इज़ अ लेयर ऑफ कह सकते हैं एरोगेंस का लेयर, और उसके पास जो साइंटिफिक नॉलेज होगा, जो टेक्नोलॉजी होगी, जो ग्लैमर होगा, all these will become layers for us, okay?
before we actually recognize and see that this is the Masih Dajjal, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا. تو اس کی جو لیئر ہے, greatest of layers, that is the layer of misinformation. یاد رکھیں, that is the strongest layer. دجال کے دور میں اتنی مس انفارمیشن ہوگی کہ لوگ اپنے صحیح بلیف سے دور ہوتے جائیں گے. نالج ول بی لاسٹ. ایوری ون ول بی اسپریڈنگ مس انفارمیشن, misinformation about religion, misinformation about the truth, and people will be accepting batil as the haq. People will be going after false ideologies and all sort of these things. And then what will happen کہ جو اس مس انفارمیشن کا قائل نہیں ہوگا, who will go, جو بھی اگینسٹ دا ٹائڈ جانے کی کوشش کرے گا, اس کو بہت زیادہ تانے دیے جائیں گے, اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ الگ فیل کروایا جائے گا, اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپرائیوڈ فیل کروایا جائے گا, اس پہ ایکسٹریم پیئر پریشر ہوگا ٹو ایکسیپٹ دوز ویلیوز, اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا جینا حرام کر دیا جائے گا, ان شارٹ. And that's why this is the greatest of fitna. And that's why Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, he asked us to seek refuge from al-Masih Dajjal, from the fitna of Masih Dajjal in every salah. Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam wa min a'udhu min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil Masih Dajjal. یہ درود کے بعد ہر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنی سکھائی ہے کہ دعا پڑھیں. So this is what I am talking about. This fitna of Masih Dajjal, how difficult will it be to face him, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that whoever faces the Masih Dajjal, I advise him to run away. بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس نہ کرنا, because تم اس کو فیس نہیں کر سکو گے, because he will have certain powers, he will have such a convincing ability that he will convince you based on whatever he has. So میں آپ کو یہ پوائنٹ ٹو پونڈر, یہ اس میں میں آپ کو جو ہے یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. جسٹ پونڈر دیٹ آر وی getting prepared to accept Masih Dajjal as the Masiha, although he is a false Masiha, or are we actually getting prepared to recognize him and to run away from his fitna, or to save ourselves from our fitna? This we have to think, and we will inshallah talk more about it later on.